All right, students, let's start with your chemistry iGCSE paper number 40620. This is your May-June 2019 paper. And starting off with question number one, the names of eight substances are given in front of you, which are aluminum oxide, calcium oxide, and the following ones that are written. Answer the following questions about these substances. The rules are that each substance may be used once, more than once, or not at all. So starting off, state which substance is the main constituent of natural gas. Now we know that natural gas consists of your methane with the formula of CH4. But you have to just write the name over here in the given blank, and that's going to be methane. Part B, that substance is a reactant in respiration. So respiration is what? When glucose reacts with oxygen to produce carbon dioxide and water. So what is that organic compound reacting with? Oxygen. In biology, we also call it aerobic respiration. Any respiration that takes place in the presence of oxygen, and the products include carbon dioxide and water. The main constituent of bauxite. As discussed, bauxite is the ore from where aluminium is extracted. So the aluminium is extracted from Al2O3, which is going to be aluminium oxide. The answer for this question will be aluminium oxide. Next is, which one of these is a product of photosynthesis? Now, photosynthesis is the exact reverse of respiration. Photosynthesis is what? A process of photochemical reaction where a plant makes its own chemical food. Converts light energy to chemical energy. It's a photochemical reactions, and the reactants include what? Carbon dioxide and water, and the products include oxygen and glucose. So the product is again going to be oxygen. Now, the main thing to look over here, oxygen is a reactant in respiration, but it's a product in photosynthesis. A greenhouse gas. Greenhouse gas present in our atmosphere will also be methane. In your atmosphere chapter and the air constituents chapter, methane is a major greenhouse gas and it is responsible for increase in the global temperatures overall as well. Another greenhouse gas which is important one is carbon dioxide as well. If carbon dioxide was here in the options, that could also be the answer because it is also responsible as a greenhouse gas in creating the greenhouse effect as well, which is due to increasing temperatures. A macromolecular solid will be silicon 4 oxide. We also call it a giant covalent structure. Okay. Silicon 4 oxide meaning SiO2. It has a structure similar to diamond, but the only difference is that diamond is an allotrope of carbon. But when we talk about silicon, silicon also has a similar structure, a same macromolecule tetrahedral structure, but it doesn't contain carbon. Instead, it is reacting with oxygen. So it is also known as a giant covalent structure as well. So it's going to be silicon 4 oxide. Moving on to question number 2. These three are isotopes of sodium. Describe how these sodium isotopes are the same and how they are different in terms of the total number of protons, neutrons, and electrons in each. So what are we going to answer over here? First, we have to tell that what is that one thing that is common in all these isotopes. We can see that the protons are the same, the number of protons are the same. And on the same hand, if we are asked that what is different in all these three isotopes, so we know that how do we define isotopes? Isotopes are the atoms of the same element with the same number of protons but different number of neutrons. So the neutrons are different over here, or you can say the mass is different over here as well. Protons or the atomic number would mean the same thing as well. And if the examiner is asking over here that why do all these three isotopes have an overall charge of zero? What does that mean? Overall charge of zero is given to neutral atoms. And neutral atoms mean that they have same number of protons and electrons. If it has electrons that are greater than, let's say, protons, then that would be a negative ion. If, let's say, it has a, when we have protons and electrons as equal, we call it a neutral atom with a charge of zero. In case if electrons are greater than protons, that will become a negative charge. And if electrons are less than protons, then that will mean a positive
charged atom. Next is, why do all three isotopes have the same chemical properties? Chemical properties depend on the electrons. Because all these three isotopes have the same number of electrons, that means that these electrons would be responsible in the same type of bonding. They are going to bond in the similar way, whether it's a transfer of electrons, whether it's sharing of electrons, it all depends that how much electrons do they have. If all three isotopes have the same number of electrons, that means they have the same chemical properties. But what if the examiner asks you that why do these three isotopes have different physical properties? Then you would say that they have a different mass number. Then we have a question, why do sodium ions have a charge of +1? Now, sodium is in group 1, and that means it has an electronic configuration of 281 as well. So this means, why does it have a +1 charge? Because it has to lose one electron in order to have a stable electronic configuration. So this is going to be the answer for that. Why do sodium ions have a charge of +1? Let's say if you're asked a similar question, why do magnesium ions have a charge of +2? अब magnesium आपके पास आता है group 2 में, which means its electronic configuration is such that it has two electrons in its outermost shell. So it's going to have an electronic configuration of 282, and it has to lose two electrons, and then it's going to have a charge of +2. Carbon is an element which exists in different forms. Name the two forms of carbon that have giant covalent structures. So I just mentioned, we call these the allotropes as well. Allotropes of carbon include two main ones in your syllabus. One of them is what? Graphite. And the other one is diamond. Graphite and diamond. There is also one more, graphene, but that's not usually asked, and that you should just know the name. Other details are not to be known about graphene. Name the oxide of carbon that is a toxic gas. Yes, carbon monoxide. Carbon monoxide is that oxide of carbon that is a very toxic gas, and it is produced in incomplete combustion. Now, why is it a toxic gas? Incomplete combustion means that the oxygen was in a limiting amount. When oxygen is not in excess, let's say it's in a limiting amount, incomplete combustion हो जाएगी. अब उस incomplete combustion में we will have what? Carbon monoxide. And carbon monoxide means what? It is a toxic gas as it reacts with hemoglobin. Hemoglobin is a molecule that is responsible for the oxygen transport in our human body as well. But the problem is that hemoglobin has a high affinity for carbon monoxide. Due to this high affinity with carbon monoxide, what happens is it reacts with carbon monoxide more readily, so there is less space for the oxygen to travel. तो उसकी वजह से हेमोग्लोबिन में सारी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बचती. तो उससे ब्रेथलेसनेस, फटीग कॉज हो जाती है, रेस्टलेसनेस होती है, आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं होती बॉडी के अंदर. Moving on to question number 3. This question is about phosphorus and compounds of phosphorus. Phosphorus has the formula of P4. Some properties of phosphorus are shown below as well. Its melting point, boiling point, electrical conductivity, and solubility in water. Name the type of bonding that exists between the atoms in a phosphorus molecule. So phosphorus is a non-metal. And within phosphorus, we will have which type of bonding? Non-metals have covalent bonding. You can just write covalent as well. That will give you the mark. Explain in terms of attractive forces between particles why P4 has a low melting point. Now, there's a very easy reason for this, and you have to write the same one every time when you're given this such question. You are going to say that due to the weak forces, of attraction, what happens is that less heat, you can say less temperature or less heat or less energy is required to overcome the forces between these particles, or you can write that less heat or energy is required to break those bonds. That is why it has a low melting point. Explain why phosphorus is a non-conductor of electricity. Now, anything which is a conductor of electricity, why would it be a conductor? Because it has free or mobile electrons. अब phosphorus एक non conductor है, ठीक है. Non conductor of electricity का मतलब है that it has no free electrons या फिर no mobile electrons.
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे तो चार्ज कैसे कैरी होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होता है करंट। Phosphorus reacts with air to produce phosphorus 5 oxide. Write a chemical equation for this reaction. तो P4 है, it reacts with air. Air में क्या होता है जी, ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट भी आपको एग्जामिनर ने ऊपर बताया हुआ है, दैट इज P4O10. The only thing we have to do over here is balance this equation. So we have 2 oxygens on the left hand side, 10 oxygen on the right hand side. By adding a 5 over here, we can balance this chemical equation. I guess, yeah, this is now balanced. What type of chemical reaction is this? Remember, whenever something is reacting in air, it means that it is combustion. क्योंकि reactants में आपके पास ऑक्सीजन भी आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही है। Phosphorus 5 oxide P4O10 is an acidic oxide. Phosphorus 5 oxide reacts with an aqueous sodium hydroxide to form a salt containing phosphate. Water is the only other product. Write a chemical equation for the reaction between phosphorus 5 oxide and aqueous sodium hydroxide. Phosphorus 5 oxide में you don't have to write down the chemical formula, उन्होंने already आपको दिया हुआ है P4O10। वो कह रहे हैं इसको हमने रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्ट। अब सॉल्ट ऐसा है जिसमें फॉस्फेट आयन है। अब मेटल चाहिए होता है एक सॉल्ट के लिए और एक नॉन मेटल चाहिए होता है। नॉन मेटल तो आपके पास फॉस्फेट हो गया, मेटल क्या होगा, सोडियम। सो इट्स गोना बी व्हाट, सोडियम फॉस्फेट। नाउ व्हाट्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट? तो सोडियम होता है +1 क्योंकि वो ग्रुप 1 में है, और फॉस्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। नाउ ड्यू टू इट्स बीइंग अ पॉलीएटॉमिक आयन और अ कंपाउंड आयन, यू हैव टू मेमोराइज दिस एज वेल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको एक प्रोवाइड भी कर दूंगा, आई प्रोवाइड यू विद द टेबल ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयंस एंड द कॉमन वंस दैट यू हैव टू मेमोराइज। तो व्हेन यू क्रॉस दीज चार्जेस, Na क्या बन जाता है, Na3PO4 1 plus, whenever, remember, whenever a metal oxide reacts with a sodium hydroxide, it's always going to produce a salt, and water is the only product. Now the only thing left is the balancing. Start with the metals first. यहाँ पे आप देखो कि लेफ्ट पे अच्छा जी 1 Na है, राइट पे 3 है, और लेफ्ट पे अगर आप फॉस्फोरस देखो तो आपके पास 4P है, राइट पे देयर इज ओनली 1P, तो why not add a 4 over here? लेकिन by adding and balancing phosphorus, what has happened is कि जो सोडियम है वो कितने हो गए, 4 3 12, तो यूल हैव टू ऐड अ 12 ओवर है। अब उसकी वजह से व्हाट हैज हैपेंड कि हाइड्रोजन्स भी हो गए हैं 12, तो यूल हैव टू ऐड अ 6 ओवर हेयर इन ऑर्डर टू बैलेंस द हाइड्रोजन्स, एंड दिस इज हाउ द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। Phosphine has the formula PH3. Complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of phosphine. Show the outer shell electrons only. A phosphorus is in group 5. Phosphorus is what? It is in group 5. Group 5 meaning it has 5 electrons in its outermost shell. अब यहाँ पे we can see that 3 of the electrons of phosphorus will be bonding with hydrogen, which means that still it has one lone pair present. बाकी उसने हर तरफ सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ है, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी, बट अगेन इट हैज a double bond and a lone pair still left in phosphorus. Moving on, phosphine pH3 has a similar chemical structure to ammonia NH3. Ammonia acts as a base when it reacts with sulfuric acid. What is meant by the term base? Now, can someone tell me, Danish, can you hear me? Hmm. Can you tell me what is the definition of an acid and a base? Any idea? Hmm. How do you define an acid or how do you define a base? Acids can be defined as proton donors, whereas base would be defined as proton acceptors. Write a chemical equation for the reaction between ammonia and sulfuric acid. Now, ammonia is what? NH3. And when it reacts with sulfuric acid is what? H2SO4. ये क्या प्रोड्यूस करेगा?
Ammonia, whenever reacts with an acid, remember it's going to form an ammonium salt. तो और अमोनियम क्या होता है? NH4 which has a charge of +1. सल्फेट का जो चार्ज होता है, हाउ डू आई नो कि अब जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला क्या है? NH4 इज +1, और जो सल्फेट होता है उसका चार्ज क्या है? 2 सो NH4 का 1 इधर आ जाएगा और SO4 का 2 इधर आ जाएगा, सो इट बिकम्स व्हाट? NH4 2 SO4. Now, if we balance the equation, we have two nitrogens on the right hand side. I only have to add another two in the reactant side to balance the equation. Is it clear, Danish? Okay. Methanol is made industrially by reacting carbon monoxide with hydrogen. The gases react at a temperature of 250 degrees Celsius and a pressure of 75 atmospheres. The forward reaction is exothermic. Now, exothermic means that heat is released to the surroundings. Or we can say that the delta H for this reaction is negative. The question is, suggest a source of hydrogen for this industrial process. That where has the hydrogen basically come from? Where did we obtain the hydrogen for this reaction? So the very common source of hydrogen is natural gas. Natural gas containing a very important compound methane. Natural gas से हम क्या obtain कर लेते हैं? हाइड्रोजन को, ताकि हम हाइड्रोजन को फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के मेथनॉल प्रोड्यूस कर सकें. Complete the table using only the words increase, decrease, or no change in the following table. Adding a catalyst. A very important thing to remember. Catalyst will only increase the rate of reaction. अगर catalyst का कहीं effect होगा तो वो सिर्फ rate of reaction पे होगा. एक चीज लिख लें, याद कर लें, catalyst has no effect on equilibrium. इक्विलिब्रियम के ऊपर अफेक्ट सिर्फ क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन. आई राइट इट ओवर हेयर. इक्विलिब्रियम इज ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड concentration according to the Le Chatelier's principle. Catalyst has no effect on equilibrium. So adding a catalyst will increase the rate of reaction, but it will have no change on equilibrium. Increasing the temperature increases the rate of the reaction, but अब सवाल ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, आपके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या शिफ्ट होगा? अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ चेंज दैट इज ब्रॉट एंड इट्स गोइंग टू either increase the products or it's going to increase the yield of the reactants. अब हमें कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा? टेम्परेचर के लिहाज से रिमेंबर वन थिंग, an increase in temperature always favors the endothermic reaction and a decrease in temperature always favors the exothermic reaction. अब आपको जो ये रिएक्शन दिया हुआ ये क्या था? एक्सोथर्मिक. ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आप कर रहे हो, ये तो नहीं फेवर करेगा एक्सोथर्मिक को, मतलब कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, बल्कि उलट ये किसको फेवर करेगा? इट इज गोइंग टू फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास एंडो है, और जो आपको क्वेश्चन में बताया होता है फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक. और बैकवर्ड रिएक्शन फिर ऑटोमेटिकली आप खुद बता दोगे कि वो क्या है? एंडोथर्मिक. अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, और मैंने बताया अभी आपको ऊपर कि Le Chatelier's प्रिंसिपल क्या कहता है? दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो बैकवर्ड वाला है, तो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ऑन द यील्ड ऑफ मेथनॉल. मेथनॉल तो एक्सोथर्मिक साइड पे था, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से फेवर तो बैकवर्ड हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड एंडोथर्मिक है, तो यील्ड ऑफ इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज, द यील्ड ऑफ मेथनॉल विल डिक्रीज, बल्कि उल्टा द यील्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल इंक्रीज. व्हाट इफ यू डिक्रीज द प्रेशर? प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे. अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे इट इज गोइंग टू फेवर दैट साइड जहां पे कम मोल्स है, और अगर आप प्रेशर कम करोगे दैट इज गोइंग टू फेवर द साइड जहां ज्यादा मोल्स है. अब आप प्रेशर कम कर रहे हो, जब आप प्रेशर कम करोगे किस साइड पे कम मोल्स हैं? लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो वी हैव 1 CO एंड 2 H2O, तो लेफ्ट साइड पे तो आपके पास 3 मोल्स हैं. प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखो तो सिर्फ 1 मोल है. तो प्रेशर बढ़ाने से कौन सी साइड फेवर होती है? लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली, और लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड तो है मेथनॉल की. सो यस, इफ यू लुक एट यहाँ पे, लेकिन फेवर यहाँ पे आप लेकिन क्या कर रहे हो? डिक्रीजिंग द प्रेशर.
डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द साइड विद मोर नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मेथनॉल जो है वो किस साइड पे है, जहां पे यू हैव लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो जो आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, ये भी इक्विलिब्रियम किसको फेवर करेगा फिर, जहां पे मोल्स ज्यादा हैं, विच इज अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी फॉरवर्ड को फेवर नहीं कर रहा, सो इट इज गोइंग टू डिक्रीज। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा whenever the temperature increases और whenever the pressure increases and vice versa। अगर आप डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अगर आप डिक्रीज करोगे प्रेशर तो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो डिक्रीज। Methanol is a member of homologous series of alcohol. State two general characteristics of homologous series. There are total of five properties भी हम इसको कहते हैं, properties of homologous series. For example, they have the same chemical properties. ठीक है, आप लिख सकते हो that their chemical properties are same. Second के they all have the same functional group. They have what? They have the same functional group. Draw the structures of the two different alcohols, each containing three carbon atoms. Show all of the atoms and all of the bonds and also name these two alcohols. वो कह रहे हैं मेक एन अल्कोहल जिसके थ्री कार्बन एटम्स हो। पहले तो हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं अल्कोहल्स का क्या होता है, CnH2n+1OH, मतलब कि C3H2n2 6R प्लस 7 C3H7OH हमने बनाना है। थ्री कार्बन वाला होता है प्रॉप, और अल्कोहल का मतलब इट्स गोना बी प्रोपेनॉल। तो हमने क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। बट दो कैसे बनाऊं, आइसोम वी आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, आइसोमर्स। कैसे, एक तो आपके पास हो जाएगा स्ट्रेट चेन, यू कैन ड्रॉ वन ऑफ देम एज अ स्ट्रेट चेन वन। ठीक है, यू कैन कनेक्ट द OH ओवर हेयर एंड द रेस्ट ऑफ देम वुड बी व्हाट, हाइड्रोजन्स। ये हो जाएगा प्रोपन वन ऑल। This is what, propan 1 all. What would be the second one? If I change the position of this OH and move it from the first carbon to the second carbon. If I move it from the first carbon to the second carbon तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपन टू ऑल। ठीक है, ये बन जाएगा जी प्रोपन टू ऑल, और रेस्ट आपके पास वही हाइड्रोजन्स होंगे। मेक श्योर कि आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स शुड बी द सेम इन बोथ ऑफ देम एज वेल, बिकॉज आइसोमर्स आर व्हाट, isomers आपके पास same chemical formula, different structural formula. What term is used to describe compounds with the same molecular formula but different structural formula? And I just told you, and that is going to be what, isomers. Which one? Structural isomers. Structural isomers की you should know कि आपके पास तीन टाइप्स होती हैं। वी हैव चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड पोजिशनल आइसोमर्स। ऊपर जो मैंने टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की है, दैट इज नोन एज व्हाट, the functional group isomerism. Alcohols react with carboxylic acids to produce esters. The structure of the ester X is shown over here. Name the ester X. हमें पता है कि एस्टर दो चीज़ों से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर एंड वाटर। ठीक है, नाउ यू कैन सी द साइड दैट हैज द कार्बोनिल ग्रुप, द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये हमेशा कौन सी साइड होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड जिसने OH लूज किया था। एंड द अदर साइड, दिस वन, ये वाली आपके पास साइड कौन सी है, द अल्कोहल वन। नाउ वेन एवर वी नेम द एस्टर, याद रखें फर्स्ट वी लुक एट अल्कोहल। अल्कोहल में कितने कार्बन है, दो कार्बन, इट वॉज इथेनॉल। इथेनॉल को हम लिखेंगे एज इथाइल। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा था, एक कार्बन वाला, मतलब कि मीथेनोइक एसिड। दैट मीथेनोइक एसिड से हम निकालेंगे मीथेनोएट। सो व्हाट इज द फॉर्म नेम ऑफ दिस एस्टर, ethyl methanoate, because it is made up of ethanol and methanoic acid. Give the name of the carboxylic acid and the alcohol that react together to produce the ester X. तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा यूज हुआ था, मीथेनोइक एसिड, क्योंकि दैट हैड वन कार्बन। एंड विच अल्कोहल वाज यूज्ड, इथेनॉल। एस्टर वाई इज डिफरेंट फ्रॉम एस्टर एक्स, बट वो कह रहे हैं फॉर्मूला तो वही है, C3H6O2। यहाँ पे भी कितने थे,
टू कार्बन इधर थे, एक कार्बन इधर था। डिफरेंट कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास अभी यहाँ पे जो अल्कोहल था दैट वाज अ टू कार्बन अल्कोहल, और मेथनॉइक एसिड जो था वन कार्बन वाला था। अगर हम अल्कोहल वन कार्बन वाला ले लें, मतलब कि मिथाइल, और कार्बोक्सिलिक एसिड इफ वी टेक द टू कार्बन वन इथेनॉइक एसिड, तो वो क्या बना देगा? मिथाइल इथेनोएट। एंड इफ वी ड्रॉ इट स्ट्रक्चर ओवर हियर एज वेल, ठीक है, यस वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इथेनॉइक एसिड के पास दो कार्बन होते हैं, एंड प्लस इट हैज दिस ओ एज वेल, ओ एच एज वेल, और रेस्ट आपके पास क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन्स। राइट साइड पे अब हम मिथेनॉल बना लेते हैं। मिथेनॉल क्या होगा? दैट हैज एन ओ, यहाँ पे एच, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर व्हाट? हाइड्रोजन्स। नाउ अब मैं इसके में एस्टर्स कैसे बनाऊंगा? यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली। दिस इज अ वन टाइम मेथड एंड इट्स गोना बिकम वेरी इजी फॉर यू। सबसे पहले वी आर गोइंग टू रिमूव द ओ एच फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड वी आर गोइंग टू रिमूव द एच फ्रॉम द मेथनॉल अल्कोहल से हम रिमूव कर देंगे। और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा that would be known as the ester bond. This is how we form what? This is how we make the ester.